Hello, everyone. Welcome back to the Edumont podcast. I'm Jasleen, a qualified US CPA working with PwC and your host today. At Edumont, we don't just hear about success stories, we dive deep into real stories, struggles, and those light bulb moments for clarity. Today, I'm thrilled to be with Mr. Kapil Budhwani, who is a BCom, MBA, and working as a manager in FP&A at HCL Tech. Kapil sir is an Edumont student who just nailed the FAR exam from India. So great to have you here. How have you been? I'm confident and studying hard. Oh, great. Good to know that. So we'll start with our Yeah. questions. So why CPA, sir? Did the Big Four dream pull you in? Was it global reach or something deeper that made you choose this path? That's a good question. So why CPA? So basically, I'm a finance experience professional, and the next pipeline for me is a CFO, the top hierarchy if I'm talking about as a finance function. So I have very limited choice looking at my experience, my age, my personal responsibility. So I have very limited choice, and CPA is one of them. And that I because I opted CPA because it's a elite professional qualification and it is globally recognized. So and second thing is that uh, the time it is required, I am able to basically give that time. उतना टाइम मैं दे पाऊंगा. That's why I just opted for CPA because it's a first is the elite one. Second, I'm able to do it basically. So that's why the CPA. Great. Um, did you ever consider other routes like exploring CMA, CFA, ACCA before settling on CPA? Yes, yes. So I went through various basically I was just researching कि मेरे को CPA करना चाहिए because finance में there are few major options but again are you able to do it? Basically your time is allowed, आपको time allow कर रहा है because you are a working professional, आपको आपका work allow कर रहा है, आपको आपकी family allow कर रही है. So when I go through the SEMA, I went through the CFA. Those are the toughest that need more time. And looking at my current responsibility and working basically hours, I cannot give you that much of time. So the option is best suitable for me is a CPA and CMA. But अब दोनों में से मेरे को एक choice करना था, तो go for the Higher one. higher one because basically ultimately if you done a CPA then definitely CMA so you can do it later on, but this is the one which is required and which is equivalent to CA otherwise. That is one more thing because it is important because in any organization if I'm talking about US, CPA is required. Whether as a auditor, internal auditor, external auditor, CPS must because ultimately someone has to watch the company's financials and the CPA is only the qualification where you will get this opportunity, and that is a always opportunistic domain because कंपनियां तो बनती जाएंगी लेकिन उनको मॉनिटर करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, उन पे कंट्रोल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए फाइनेंशियली दे आर रिपोर्टिंग एवरीथिंग करेक्टली और नॉट. दैट्स व्हाई CPA is the option for me where I can get the opportunity to learn, grow both. Wonderful. Wow. That's insightful. So Edumont often comes up as that difference maker. How did you first find out about Edumont? A late night good Google hunt, a friend's recommendation, or just timing? So basically when I'm applying for a CPA, when I'm looking for a CPA because I was confused कि करना भी कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा क्योंकि because it's not easy कि आपने सोच लिया और कर लिया. Sometimes you have to check the basically facts check करने पड़ते हैं कि do you have a potential or not. So I was going through multiple websites, YouTube videos. One of the day I saw one video, the conversation podcast is happening between Mohit and Rohan. So they are discussing about the CPA, how the CPA is, what is required, and all these things. So that time I have contacted to Mohit. कि मोहित यार एक चीज़ बताओ कि basically I'm looking for a CPA. I have done MBA finance and I'm BCom graduate. I'm working in Birlasoft. That point of time I was working in Birlasoft and I'm a FP&A. So it is suitable for me और कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि because you guys training people every day. सो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा बेसिकली इट्स मेरा जॉब हैवी कि नहीं मतलब बेसिकली इट्स गेम फॉर मी और नॉट. सो
उसने बोला नहीं सर आप कर पाओगे, देर आर सो मेनी प्रोफेशनल, बेसिकली सीपीए इज डिजाइंड फॉर ऑन प्रोफेशनल पीपल हु इज वर्किंग। वो कोर्स ही बना है उसी के लिए कि द पीपल आर वर्किंग, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, बट उनका जो करिकुलम डिजाइन है, ड्यूरेशन डिजाइन है, वो है ही कि आप वर्किंग होके कर पाओगे। सो दैट इज डिजाइन इन अ वे। सो मैंने कहा फिर उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बेसिकली आई आस्क्ड हिम बेसिकली व्हाट्स द स्टेप्स नेक्स्ट आई टू डू, सपोज आई विल डिसाइड। सो बोला सर आपको फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट इशू करानी पड़ेगी। मैंने कहा व्हाट इज ट्रांसक्रिप्ट, तो बोला कि ट्रांसक्रिप्ट सर होता ही है कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर मार्कशीट्स होती हैं, डिग्रीज होती हैं, बट यूएस में सीपी चलता है, सीपी क्रेडिट चलता है, ठीक है, द पॉइंट्स चलते हैं। तो आपको आपकी मार्कशीट, बिकॉज सिंस मार्कशीट वो आप कोई भी नकली बना सकता है, सो दे वांट यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट जो कि यूनिवर्सिटी से सील्ड होती है और यूनिवर्सिटी उसको डायरेक्टली भेजती है नाजबा में, और वहां से वो आपका क्या करेंगे, स्कोर करेंगे आपकी जो डिग्री है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, उस सब्जेक्ट के हिसाब से दे आर गोइंग टू कन्वर्ट योर मार्क्स टू सीपी स्कोर, and after that they will check you are eligible or not. Once you are eligible, then they will you go ahead and you can apply for a CPA. So that is the process. So that is the next step that you have to do. So उसके बाद मेरे को समझ में आया कि हाँ now transcript के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, and I have started from there. I have started my things. Basically I started journey for CPA. So I I go for a transcript. I shoot the transcript, get the eligibility, and get the CPA enrollment done. And after that, I cleared my, I started preparing for my exam and I cleared bar. And now I'm preparing for audit. Great, great. Um, okay. Now, give us the inside scoop. How did EduMont's materials, test banks, mocks actually make a difference for you? So the content Edumont provide, basically it's a very understandable format, और उसमें वही points वो cover करते हैं which give you, जहाँ पे आपके पास exam में more highlights आता है, basically which is more relevant to the exam, because content बहुत ज़्यादा होता है, सारा content आप you cannot memorize, but they can highlight. So if I'm looking at the books and content, they can highlight the key pointers which you need to memorize, maybe you need to more focused on it, because those kind of a content will come in MCQs. So that's why it helped me a lot, because when I'm reading a Edumont material and UWorld material, so they specifically highlight the section which is for जिससे relevant questions ज़्यादातर आपके MCQs में आते हैं. So आपको वो ज़्यादा better रहता है कि you can keep focusing on it, and सारा if you go with the topic wise topic, note wise note, mnemonics specifically I'm talking about, that is very helpful to understand few basically methodology, basically few terms. So वो बहुत ज़्यादा help करते हैं. So normally you cannot thought about the mnemonics. If they're already available, readily available, why should not we use it? We should use it and go for it. So those kind of things help me a lot. Yes, definitely, definitely, 100%. Now let's talk about our favorite Rohan sir. If you had to describe his teaching style in one line, what would you say? Simple and easiest. Great. And those game plan calls, students say they are like where strategy meets therapy. How did these shape your prep and mindset? That is very helpful for me. Basically, ultimately, you are the executor because you are performing in a MCQs. But how well are you doing? That's something you need input from the mentor who is helping you to go through the journey. So that helped me a lot, because I have done a lot of MCQs, lot of TBS, lot of mock tests. But जहाँ पे problems आ रही थी, where I'm not scoring much more, because ultimately MCQs you will get 90, mock test में अगर 90 plus आ रहे, then you are somewhere align, मतलब actual exam में you can 85, 82 आराम से score कर सकते हो. So that way, so basically वहाँ पे और सब कि आप कहाँ पर हो, किस जगह पे हो, क्या स्टेप आपको करना है, अभी कितना और अटेम्प्ट्स करने हैं, कौन कौन से सेक्शन वीक है, दैट गेम प्लान विल हेल्प यू अ लॉट. 100%, that's right. So full time job के साथ CPA preparation balance कर पाना, how difficult was that? It was very tough basically, because full time job है, then you have to study, then you have to manage your families. That would very difficult for me. And specifically just pointed about point one to point about the transcript process, because transcript process जब आप पहले eligible होगे तभी तो आप एग्जाम दे पाओगे. And for my case it took almost 8 to 9 months. Oh my God. Would you
care to elaborate? Why did it take so much time for you to get your transcripts? Yeah, definitely, because I Yes. wanted to share my experience so it can help others. So when I applied for a transcript, basically I belongs from Gwalior. So I had done MBA and BCom both from Gwalior. Touchwood, I have done from one university. If someone has multiple university, there is a altogether marathon. So if you see my story, then you can understand like how much time you need and how early you should apply for CPA. So when first I applied for a transcript, so I went to the university. मैं university गया, वहाँ पे मैंने apply किया. I filled the form. Normally they have a format in which you need to put your all mark sheet information. So वो खुद नहीं करके देते, आपको एक format है, वो format आपको fill करके उनको submit करना पड़ता है. You have to submit your fees and they will pull your old records and they validate, then they stamped it and then they send it to the NASBA. ये process होता है इनका. That took almost 4 months. So basically that process almost took 4 months. I was started for BC preparation. BC 3 महीने, I think 3 महीने बाद content change होना था. So I was started 3 months. So I was not able to BC because 4 महीने तो वहीं यूनिवर्सिटी ने ले लिए. So 4 महीने तो मेरे वो ऑलरेडी गए. Then उसके बाद जब उन्होंने भेजा वहाँ पे, जब मार्कशीट पुट वहाँ 4 महीने के बाद जब वो पहुंची मेरी मार्कशीट वहाँ पे, मतलब डॉक्यूमेंट जब मेरे पहुंचे, कोरियर पहुंचा, तो वहाँ पे सिर्फ मेरा पासपोर्ट था, उसके अलावा सारी ट्रांसक्रिप्ट मिसिंग. ओह गॉड. मीनिंग जो आपने पैकेज बना के वहाँ पे भेजा, उसमें उन्हें सिर्फ आपका पासपोर्ट मिला, नथिंग एल्स, नो अदर डॉक्यूमेंट्स एट ऑल. यस, ओह दैट्स क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने भेजा था, बिकॉज इट्स डायरेक्टली सेंड बाय यूनिवर्सिटी, इट कैन नॉट हैंड ओवर टू द स्टूडेंट, दे डायरेक्टली सेंड बाय यूनिवर्सिटी. सो ऑलमोस्ट मेरा 5 मंथ्स वहीं चला गया था. देन आई रीच आउट टू यूनिवर्सिटी, आई फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर, कॉन्टेक्ट विद द पर्सन, दे आर नॉट लिसनिंग कि भाई हमने तो भेज दिया, हमारा बीच में क्या, वी डोंट नो, go to the post office, go to the XYZ, but हमने भेज दिया. Doing the blame games. Yeah, blame game kind of a thing. And then I try to communicate, try to escalate vice chancellor, because the higher authority in university is vice chancellor. So I have sent communication over the email. जब वो email पे भेजा, I'm not getting any response. I try to attempt thrice or 4 times. Then I'm getting frustrated because अब क्या होगा, क्योंकि बी से तो आप दे नहीं पाए. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ऑडिट, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन क्लासेस चल रही थी, वो ऑडिट की चल रही थी. तब तो वो दे नहीं पाओगे, मतलब उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट आगे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अनटिल अनलेस आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है सीपी नासबा की तरफ से, यू कैन नॉट गो प्रोसीड, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गया था, वो मेरे लिए एक शो स्टॉपर हो गया था, और उससे मेरा मोटिवेशन फैक्टर इज गेटिंग डाउन. गवर्नमेंट है, कौन कब हेल्प करेगा, यू डोंट नो. आई एम ट्राइंग टू अप्रोचिंग एवरीवन, कोई कांटेक्ट मिल रहा था. आई ट्राई टू अप्रोच दोज कॉन्टेक्ट कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें करा दो, ये है वो है, बट नॉट गेटिंग हेल्प. एंड आई एम डिस्कसिंग सेम इशू विद वन ऑफ माय फ्रेंड, देन ही सजेस्टेड मी वन पाथवे. बोला कि यार कोई नहीं सुन रहा ना, सो डू वन थिंग, ट्राई टू रीच आउट टू CM हेल्पलाइन और PMO हेल्पलाइन, दोनों पे आप एस्केलेशन कर दो. एंड शो योर ईमेल्स, जो अपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करें कि नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज फोन का तो कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता, बट ईमेल इज ओनली द कम्युनिकेशन दैट यू आर सेंडिंग ईमेल, बट नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग. ऑल्सो शेयर द ईमेल जो नासबा से आपके पास आया है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बीच में पोस्ट ऑफिस से मिस हुआ है, किससे हुआ है, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम. यू हैव डन योर जॉब, नाउ दैट्स देयर जॉब कि आपका डॉक्यूमेंटेशन सेफ पहुंचाए. Now this is something to learn. A good recommendation, a good suggestion by your friend. Correct. PM helpline. Right. CM helpline पे आप contact करो if university is not listening to you. Correct. Because otherwise there's no hope for the student, right? Correct. There's no way, nobody is listening to you. What will you do? You're stuck. So this is a great learning. Right. So because you don't have a contact, आप किसको approach करोगे? Nobody is going to listen. You already tried. Correct. You already tried to send an email, but nobody is responding. Correct. I know everybody is busy. That's okay, but somebody is facing issues. And also life is, the career is dependent on this. Right. Because ultimately I'm not able to proceed further because someone is not doing their job. I cannot basically go ahead. वो मेरा basically bottleneck था, show stopper था. So I already escalated after 15. Also I'm following up with PM and helpline every alternate days because उनके भी अपने एक turnaround टाइट है, तो एक 5 दिन का कंप्लीट होने के बाद एवरी अल्टरनेट डेट आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, मतलब उस पर रिमाइंडर डाला था, बिकॉज यू कैन नॉट डू फर्दर, रिमाइंडर के अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सडनली 20 और 25 डेज बाद आई गॉट वन कॉल फ्रॉम यूनिवर्सिटी कि सर आपका ये एस्केलेशन आया है, आपका ट्रांसक्रिप्ट मिसिंग है, हमने तो भेज दिया था. तो मैंने कहा मैम
आपने भेज दिया था बट वो पहुंचा नहीं है, मैं पर्सनली आपसे मिलके भी गया था एंड ईमेल भी कर रहा हूँ बट नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, आई डोंट हैव अ चॉइस, भाई मेरे को तो करना है, मेरे को करना है, तो अभी जो चीज मेरे हाथ में आई कैन डू इट मैक्सिमम, बट अभी विच इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्ट आपको भेजनी है, देन दे आर एग्री टू सेंड द ट्रांसक्रिप्ट डायरेक्टली टू नाजबा ईमेल। तो मैंने उनको ईमेल शेयर किया, वो ऑलरेडी एस्केलेशन ईमेल में था, आई ऑलरेडी सेपरेटली आई शेयर्ड अगेन एंड दिस converted my transcript to digital format and then sent it to नाजबा। और फिर नाजबा को मिला, I got the confirmation कि they received my transcript. After that, NASPA took almost 45 days. That's the standard time. 45 days they took. I am following up with that, but it took 45 days. So वहाँ उसके बाद I got the eligibility check कि हाँ it is done. Now you are eligible. And they have assigned Washington, since I have already applied for Washington board. So that's done. So वहाँ से फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, अब मेरे पास सब कुछ है, then I can start further. Otherwise I was getting demotivated because ultimately I don't have anything to do further, which is beyond my control. I can study, that is my own control, that is in my control, rest Correct. I cannot control it. Correct. Oh God, this took a lot of your time. Yes, And it almost would have 8 to been- 9 months is wasted in all these things. It would have been demotivating. Everybody is like, because maybe other also facing the same Same issues. issues. Yeah, definitely. But then the lesson here is do not lose your hope. Right. Keep your hopes high Yes. and keep working. Be consistent. If you are in the right direction, things will move according to your, you know. Yeah, because if you're enrolling, that means somebody is giving guidance that you are made for it. Yes. So try it as much as you can, which is in your control. Otherwise, I already suggested कि अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं भी काम कर रही है तो you have a CM helpline number and PMO helpline number that will help you. Maybe they will take 1 month more, but at least you will get such. I get the information that my work is already done, my transcript is already sent, and see, I'm already cleared one FAR exam. So after transcripts, you when you got the clearance, when you got your evaluation done, you started with your CPA prep then afterwards, or were you like preparing simultaneously when all of this was happening? So there is a shift change now. So audit, I think audit also gone basically. So now I have an option. I contacted to Saurabh and I asked him like क्योंकि audit का भी syllabus I guess change हो गया था. So this is the time जब BEC हटके specialization आ गए थे and then audit में भी changes आए थे. Correct. Okay. हाँ, so that time फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास ऑप्शन था फार का, मतलब बेसिकली ऑडिट तो गया बिकॉज आई ऑलरेडी डीमोटिवेटिंग, तो अब मैंने फिर पूछा, मतलब ऐसा नहीं था कि ऑडिट की मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, बट फार की क्लासेस स्टार्टेड हो गई थी, तो आई आस्क्ड सौरभ कि करना क्या चाहिए, ऑडिट के लिए वापस जाऊँ या फिर फार स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, क्योंकि उस टाइम फार की क्लासेस नहीं थी, मेरे टाइम पे ऑडिट चल रहा था। तो फिर सौरभ ने सजेस्ट किया कि सर अब देखो सब छोड़ो, जो गया अब उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऑडिट के लिए जा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर फार इज द लेंथियर वगन, अगर वो क्लियर हो गया तो आपका ऑडिट का बेस क्लियर हो जाएगा, आपका आगे अगर आप बार लेते हो तो बार का बेस भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर वो क्लियर कर लिया तो आप समझ लो कि आप 50% कंटेंट जो आपका है, 50-60% जो ऑडिट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो उसी से आती हैं, और सिमिलर बार में भी सिमिलर चीजें आएंगी। तो आपके ये दो बेस क्लियर हो जाएंगे, तो फार अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो मैंने फिर शुरू से स्टार्ट किया, फिर आई स्टार्टेड फार की क्लासेस ली, फार का पूरा कंप्लीट किया। मीनवाइल व्हाट हैपेंड, माय फादर गॉट एडमिटेड। Okay. He the rectal cancer was detected to him, so he got admitted, and then again वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई लाइफ के अंदर, क्योंकि बिकॉज आई वाज डूइंग, बट यहाँ पे मेरे को रेगुलर हॉस्पिटल जाना, देन स्टडिंग, देन जॉब, देन फैमिली, आई हैव टू मैनेज। वो टाइम निकला, देन माय वाइफ आल्सो एक्सपेक्टिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो वो भी था कि मेरे को दोनों जगह पे हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे थे, वाइफ के चक्कर, वाइफ के लिए भी एंड देन फादर के लिए भी, and then continue jobs, even weekends I have to work because कहीं ना कहीं कुछ problem होता है, then you have to complete, that's standard, that is standard everywhere. that's standard so वो complete किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरा डिले हो गया, ब्रेक लग गया, and then everything gets sorted, then I started again, और वहाँ से I took 6 months because चीजें इधर उधर हो गई थी, things are getting settled down, then I took 6 months to clear the FAR. Okay, so you took 6 months because you were settling down, other challenges, you were facing other challenges as well. Okay, so that's good and that's inspiring as well. I mean, even I'm sitting here and I'm getting inspired by your story.
it's really, really something big, and still you were able to do it. Hats off to you, sir. Thank you. Really, a good one. All right, sir. Before we wrap up, we are doing a quick rapid fire. Don't think too much, just answer fast. Toughest topic in far. Lease accounting and debt. Okay. Most satisfying moment, getting exam results or getting exam approval from faculty? Getting exam approval from faculty. That is the toughest part. One Edumont feature you'd never trade. Mentorship. Amazing. First thing you did after clearing FAR exam? Thank you, God and Rohan. Both. If you had to give the CPA journey a movie title, what would it be? Quota Factory and Three Idiots. Thank you so much, sir. Your journey shows it's about smart prep, right mentorship, and staying consistent, which will help you in clearing your exams. For all our listeners, if you're ready for the same kind of clarity and support, you know where to go. Edumont is by your side. Until next time, keep learning, keep growing.